हेलो मेरे लगते जिगरो, कैसे हो सब लोग? मजे में? Now this is the time where so many festivals are coming, and one of that is the Ganesh Chaturthi. Very soon it is coming. गणेश जी बुद्धि के देवता है और जीवन में जो है, अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो आपके पास में एक रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए। तो भगवान गणेश से प्रेयर कीजिए कि आपको रैशनल थिंकिंग दे, क्योंकि थिंकिंग सबके पास में होती है लेकिन रैशनल थिंकिंग जो है बहुत कम लोगों के पास में होती है। अब आप लोग पूछोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल थिंकिंग? रैशनल थिंकिंग मीन्स जो आपको एक्यूरेट डिसीजन लेने में मदद करे, आप सही निर्णय ले सको, ऐसी जो बुद्धि है, बराबर है, ऐसी जो थिंकिंग है, दैट इज द रैशनल थिंकिंग। सो आई प्रे टू लॉर्ड गणेशा फॉर यू दैट ही गिव्स यू रैशनल थिंकिंग। वो आपको रैशनल थिंकिंग करने की कैपेबिलिटी दे। एंड मैथमेटिक्स हमको रैशनली थिंकिंग करना ही सिखाता है। एंड दिस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करता है। इसका बेस ही रैशनल थिंकिंग है, बिकॉज अ पर्सन हु हैज प्रोफाउंडेड दिस इन वास्ट वे, his name was René Descartes. Next year when you will be in 10th standard, at that time in science, physics, Cartesian sign will become. So that Cartesian sign is propounded by René Descartes. इस इंसान के बारे में ऐसा कहा जाता है बच्चों कि he was such a lazy person कि उसने अपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा टाइम सिर्फ सोते हुए भी गुजारा है। वो खाट में पड़ा रहता था वो बंदा, ऐसा उसके बारे में कहा जाता है। लेकिन उसने खटिए में पड़े पड़े भी दुनिया को जो है बेहतरीन मैथमेटिक्स की जो गिफ्ट है, बहुत सारे जो कंसेप्ट है वो उसने दिए। एंड इसलिए जो है मैंने बोला कि रैशनल थिंकिंग करो, क्योंकि वो ही वाज अ पर्सन, बराबर है, भले वो उसका बॉडी पड़ा रहता था लेकिन उसका दिमाग बहुत चलता था। एंड दैट्स व्हाई ही सेड आई एम लिविंग बिकॉज आई एम थिंकिंग। ये उसका स्टेटमेंट है। सॉरी, इट इज वेरी फेमस स्टेटमेंट कि भाई मैं जिंदा हूं क्योंकि मैं सोच सकता हूं। तो सोचना जो है, क्या कहते हैं, आपके जिंदा होने की निशानी है। अगर आप सोचते नहीं हो तो इसका मतलब आप जिंदा नहीं हो। भले आपका शरीर चल रहा है लेकिन आपकी जो अगर थिंकिंग अगर नहीं वर्क कर रही है तो आपका जिंदा रहना कोई मायने रखता नहीं है। इट इज सेड बाय रेने देकार्टे, एंड दिस लेसन, whatever the basic principle related to coordinate geometries are there, it is explained by first रेने देकार्टे। सो उसको याद करते हुए ये लेसन की हम लोग शुरुआत करेंगे। अब आप लोग सोचोगे सर आपने यहाँ पे ये ज्योग्राफी का क्या बना दिया, बट इट इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड दैट्स व्हाई आई फर्स्ट मेक दिस इज द रेप्लिका ऑफ अर्थ, बराबर। ये धरती का जो है, क्या कहते हैं, एक प्रतिकृति है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो 0 डिग्री लाइन आप देख रहे हो, इट इज इक्वेटर, ओके। एंड दिस 0 डिग्री जो खड़ी लाइन आप देख रहे हो, परपेंडिकुलर लाइन देख रहे हो, ओके, दैट इज अ ग्रीनिच लाइन, बराबर, बिकॉज ये लंदन के ग्रीनिच शहर के पास से गुजरती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ग्रीनिच लाइन, ओके। तो एंड लाइक दैट वे यहां से अर्थ ऊपर के पार्ट में नॉर्थ और नीचे के पार्ट में साउथ, और इससे इधर ईस्ट और इससे इधर वेस्ट हेमिस्फीयर। अगर मतलब अगर आप इस धरती को एक संतरा गिनो और एग्जैक्ट बीच में से काट दो तो दैट इज अ 0 डिग्री लाइन, ओके, जिसको हम लोग जो है इक्वेटर बोलते हैं, विषुववृत्त बोलते हैं, ओके। एंड दिस इज द मेडिटेरियन, उसको ग्रीनिच लाइन बोलते हैं, बराबर, ठीक है।
तो अब ऐसे अगर आप खड़ा काट करोगे तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से जो है अर्थ दो पार्ट में जो है डिवाइड। अब नाउ इफ यू वांट टू नो द पोजीशन ऑफ द अर्थ, अगर आपको कोई भी जगह पे अर्थ की पोजीशन, कोई प्लेस की पोजीशन जाननी है, सपोज यू वांट टू नो द पोजीशन ऑफ मुंबई, तो आपको ये देखना पड़ेगा ये 0 डिग्री लाइन से बराबर है ये कितना नॉर्थ है, और ये 0 डिग्री लाइन से लॉन्जिट्यूड से ये कितना ईस्ट है, बिकॉज वी आर इन ईस्ट हेमिस्फीयर, इंडिया इज इन ईस्ट हेमिस्फीयर, बोलते ना भारत पूरब में पड़ता है, तो वी आर इन ईस्ट हेमिस्फीयर। सो मीन्स at any point, any place, okay, it is indicated by the latitude and longitude, and this concept, यही concept जो है coordinate geometry के बेस में है, यूं कहोगे इसी से जो है इस latitude longitude concept को डेवलप करने में मदद मिली है। ओके, सो यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि मुंबई इज, हम लोग डेसिमल कंप्लीट में लेते हैं, फ्रैक्शन में नहीं लेते हैं, डेसिमल में नहीं लेते हैं। 19 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये 0 डिग्री जो है इक्वेटर है, इक्वेटर से 19 डिग्री ऊपर की तरफ है, एंड 72 डिग्री ईस्ट, और जो ग्रीनिच लाइन है उससे 72 डिग्री ईस्ट में है। अब इसके साथ में जरा हालोल का कंपेयर करो, तो अगर ये नॉर्थ में है तो हालोल 22 डिग्री नॉर्थ में है, यानी कि आप इससे इतना अंदाजा लगा सकते हो कि हालोल जो है 19, 20, 21, 22 3 डिग्री ऊपर मुंबई से है। ओके, और सन को जो है 1 डिग्री कवर करने में लगभग यूं समझो 1 घंटे का जो है डिफरेंस अप्रोक्सीमेट जो है क्या कहते हैं उसका जाता है, उसका बराबर है, सॉरी 10 से 15 मिनट का डिफरेंस जाता है उसका, सॉरी। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पे आप हालोल अगर आप देखो तो 73.7 ईस्ट, यानी हम लोग मुंबई से 1 डिग्री और आगे खिसके हुए हैं हम लोग। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हो कि कोई भी पॉइंट की पोजीशन इस अर्थ के ग्लोब में कहां पे होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसको जरा आप इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्ट्रक्चर के साथ में जस्ट यू कंपेयर इट, सो यू कैन सी दिस लाइन, this is the longitude, and this horizontal line, that is the latitude. So perpendicular or vertical khadi line, that is the longitude, and this is the latitude, and like that we see. Now when I have written here 2, it indicate the x, and this one indicate the y. Is it clear? This 4 indicate the y. Now with the help of this, now let's try to understand this coordinate geometry. Okay, coordinate geometry में बच्चों सम करने के लिए हम लोगों को फर्स्ट थिंग इज दैट इसके स्ट्रक्चर को जो है हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वी शुड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, सो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देयर आर बेसिकली 2 लाइन, one line is the horizontal line and one line is the vertical line. Horizontal line, this line, it is called x-axis, and this vertical line, perpendicular line, this is called y-axis. And wherever this both line cut to each other, okay, that point is known as the 0 point or point of origin. Okay, this is called point of origin. From point of origin, if you move right side, if your face is like this way and you move right side, so whatever numbers are indicated here, all these numbers are positive. And from 0 to up, if you will go, that is y-axis, and that is also all numbers are positive. If you move 0 to left hand side, then whatever number you get, it is negative. And similarly, if you move 0 to y downward, then whatever numbers are there, that is also negative. And according to this 2 line, this entire part or premises or area or surface or plane, it is divided into 4 parts. 1, 2, 3, 4. It moves anti-clock,
घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है। घड़ी में कैसा है, यहाँ पे 12 बजते, इधर 3, इधर 6, इधर 9, लेकिन ये रिवर्स उल्टा चलता है ये। ओके, सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस पार्ट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. When you want to see any point or any place in this one, then from 0 to x and 0 to y, आपको ऐसे कौन सा नंबर है और ऐसे कौन सा नंबर है वो आपको देखना पड़ेगा। सपोज आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल हियर, जस्ट सी इट। सपोज मैंने यहाँ पे जो है इस तरह से लिखा 1 and 2. So okay, so first is x, so x is 1 and y is 2, means first we will see the x point, then we will see the y point. पहले x देखेंगे फिर y. Now you can see x and y both are positive, so in first quadrant any number will be there. It is, if both are positive, it is in first quadrant. Now see second one. Now I have drawn this. Now you can see here x is -5 and y is 1. So by that you can understand that in second quadrant x is negative number and y is positive number. Okay, now here you will indicate -5 comma 1. So you can see x is negative, y is positive. Now see the third column, third quadrant. Suppose I have taken this two combination. Now see x is also negative and y is also negative, means x is also minus, y is also minus. And last, suppose I have taken this combination, then x is 4, see positive, and y is minus, that is negative. It means first quadrant both number indicate the positive sign. In second quadrant first one indicate negative and second one positive, and in third one both will negative, and in fourth one x is positive and y is negative. Okay, so according to that you have to see in which quadrant these numbers are coming. First thing is that now according to this I can fill up this, so that's why I have written here in first quadrant both are positive, means x is also positive and y is also positive. Okay, in second x is negative, y is positive. In third x also negative, so y also negative. In fourth x is positive and y is negative. But suppose if any number is come in the x or y axis, then what will be the situation? I have given here two examples. Okay, first I have written here +5 and here I am writing indicating -5. Okay, now see children, if any number is in the x-axis, okay, so x will be number and instead of y you will write 0 because y is not indicating. So if y is not indicating, it is 0, and similarly if it is in negative side then also number and y is 0. Now another example, let's take in
First it is saying 4 and then minus 5. So here you can see, if y is number, number is given in y coordinate, then x becomes 0, and we will write like this way, 0 4 or 0 minus 5. Okay, so like this way, first of all you should understand the concept of this coordinate, about this plane, how the point will be indicate. Okay, and one more thing I want to share with you, this x-axis, it is known as the abscissa. Okay, and this y-axis, it is called the coordinate. Okay, so x-axis abscissa, y-axis coordinate. This is 0 or point of origin. This much you have to keep in your mind first of all. Then exercise are very easy, without any problem or trouble you can do this kind of sums, because in among entire mathematics, easiest lesson is this. Okay, so just keep in your mind, you see this one properly, systematically, then we will start next. Now children, see the sums related to this chapter. 3.1, there is nothing. Okay, one simple common sense question is asked. You think about that. Okay, let's start with 3.2. So in 3.2, first 3 questions are the theoretical, practical type questions. Sorry, not theoretical question. First is given there, what is the name of horizontal and vertical line drawn to determine the point of any plane in the Cartesian plane? I already explained you, this one is known as x-axis or abscissa, and this is known as y-axis or ordinate. Okay, so x-axis is known as abscissa and y-axis is known as ordinate. Second question, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? So that also I explained you. This one is known as first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. Okay, first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, and coordinate of x-axis and coordinate of y-axis. Next, third, write the name of the point where these two lines intersect. So where these two lines intersect, that is called 0 point or point of origin. Okay, now this much we have cleared. Now let's start second one. It is saying that write the following. First, the coordinate of B. So it is in, if you see B is in second quadrant. So I am writing here second quadrant. Point name is B and its coordinate are, first of all you see from here x-axis, that is minus 5, and then y-axis, that is 2. So you have to write here minus 5 and 2. Next, the coordinate of C. Now you can see where is C. C is in fourth quadrant. Okay, so here this is second
Okay, you write here in which quadrant it is. Fourth quadrant. Point C. And what is its coordinate? X is 5 and y is minus 5. So 5 and minus 5. Is it clear? Next, the point identified by the coordinate minus 3 and minus 5. So where is minus 3? This is. And where is minus 5? This is. So which point is indicating? Point E is indicating minus 3 comma minus 5. So in which quadrant it is? It is in third quadrant. Okay. Similarly, the point identified by the coordinate 2 and minus 4. So you can see 2 is positive, minus 4 is negative. So where this one comes? Positive and negative. So definitely it is in fourth quadrant. So see here in fourth quadrant. Okay, 2 is positive and minus 4 is negative, and that is G. Okay. And in which quadrant it is coming? Fourth quadrant. Okay, and 2 and minus 4. What is next question? The abscissa of the point D. See, this is point D. Okay, and S, it's x-axis. Okay, so here your what is next one? It is your fifth. Abscissa of point, okay, abscissa of point D, that is D is 6. Okay, similarly ordinate of point H, ordinate of point H, see this one, and ordinate is what? Y-axis, so it is minus 3. Okay, similarly next is given the coordinate of point L. Now again you have to find the coordinate of point L. Where is L? L, you see it is in Y axis. Okay. The coordinate of point L. Okay. Now you just tell me in which line it is. It is in y-axis. So in y-axis, x is 0 and y is L is 0.5. So 0 and 0.5. Similarly, the coordinate of point M. This is last. Eight. The
coordinate of point M. So where is M? This is M. Okay, now this is x-axis and number is there. So minus 3 and y become 0. Okay, so this is the way that you can solve. Similarly, in 3.3, same kinds of sums are there, which I am going to explain you. Now children, 3.3, only two sums are there, so I am showing you both the sum here. It is saying that in which quadrant or in which axis do the point minus 2, 4, 3, minus 1, minus 1, 0, 1, 2, minus 3, minus 5 lie. Verify your answer by locating them in the Cartesian plane. So first is minus 2 and 4. Okay, so minus, it is x, and 4, it is y. So minus 2 this is it clear? So minus 2 and 4 and you give the name A. It is essential. Then next 3 is 3 and minus 1. So 3 is positive, minus 1 is negative. Okay, this is 3 and minus 1. Give this name B. Third, minus 1 and 0. See, x is minus 1, y is 0. So this one. And here, minus 1, comma 0. Okay, and next 1 and 2. 1 is positive and 2 is also positive. So in first quadrant it will come. This is D, 1 and 2. Okay, and last minus 3, minus 5. Both are negative, so it is in third quadrant. Minus 3, minus 5. It is here. Okay, minus 3, comma minus 5, and this one is E. Okay, similarly you see this second one. It is given here, plot the point xy given in the following table on the plane, choosing the suitable unit of distance in axis. Okay, this one you have to draw in your graph book. I have not that much big graph paper here to explain you, so please do in graph book and see next one. Okay, here minus 2 and 8. So minus 2 is negative and 8 is positive. So in second one, and now I am giving name P, minus 2 and 8. Second is minus 1 and 7. So again it will be same, minus 1 and 7. Give this name Q, minus 1 and 7, this point. Next, 0 and minus 1.25. Now see, if this is 1, this is 2, then this is the half of this, means 1 and half. So 1 and 2.5 will come exact half of this. And this is, oh sorry, it is minus is there, no, sorry. So minus, it will come here because minus 1 और minus 2 का हाफ ये होगा और इन दोनों का भी हाफ इनके बीच में somewhere else यहाँ पे आएगा. So this point, okay, this is, again I have done mistake, sorry. 0 is x and minus 1.2 is 25 is y. So see, अब इतना अगर आपका 1.5 हो रहा है तो
1.25 नेचुरली ये पॉइंट पे यहाँ पे होगा, सो इट इज 0 कॉमा माइनस 1.25. Okay, 0 is x and this is negative y. Next 1 and 3. So 1 is positive and 3 also positive, so it will be here PQ, so its name I am giving here R, and this is S. 1 and 3, and last 3 minus 1, so 3 and this is minus 1, 3 minus 1, this point 3 minus 1 and this name, let's give this name T. This point name is T. Is it clear? And like this way your 3.3 and as well as the whole chapter is over in one video only. Okay, after that we will start next topic, and that is your linear equation. Okay, प्लीज सी इट एट वंस, एक बार जरा इसको देख लो.